दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस टीपीएम अवेयरनेस सेशन पार्ट नंबर 1 में। सो व्हाट इज मीन बाय टीपीएम? टीपीएम का मतलब है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड इट इज डेवलप्ड बाय सीएचई नाकाजिमा, वाइस चेयरमैन ऑफ द जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस JIPM इन जापान 1971. So introduction to TPM translated into English first time in 1988. ISBN number 915299-23-2 Productivity Press Insurance. This is a combines the American preventive maintenance with the Japanese concept of total quality control and total employee involvement. Essentially an equipment maintenance system that optimize machine effectiveness, eliminate breakdowns. तो ये एक्टिविटी promotes autonomous operator maintenance, involve all departments like engineering, operations and maintenance. TPM का मतलब क्या है? Total Profit Manufacturing through Total Perfect Manufacturing through Total Productive Maintenance through Total People Management, and that is leads to Total Proud Management to the company. So अभी TPM क्या है ये हमने जान लिया, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स आर एम्पावर्ड टू मेंटेन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑन टोटली इफिशिएंट लाइंस। टीपीएम एम्स टू अचीव जीरो एक्सीडेंट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो क्वालिटी डिफेक्ट्स, जीरो वेस्ट ऑफ मटेरियल्स, एनर्जी एंड मैन पावर। बेसिक आइडिया टीपीएम की क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबल कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, परस्यूट्स ऑफ इकोनॉमिकल इफिशिएंसी, जीरो बैड मीन्स जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट्स एंड जीरो फेल्यूर्स। फिलोसॉफी ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंट एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, MP, PM, CM, participation by all, overlapping small group organization, autonomous maintenance by operators at plant in process, keep the equipment in optimal condition, visual control, making a clean workshop, automation, unmanned operation, making a workshop that requires no manpower. जो टीपीएम में 8 पिलर है, तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये 8 पिलर के ऊपर काम करती है, जिसमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, फोकस इंप्रूवमेंट, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, सेफ्टी हेल्थ इन्वायरमेंट, टीपीएम इन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ऑफिस टीपीएम। और इन सब का बेस जो है वो है कंपनी का IOS। अब जो 5 प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिश द सिस्टम टू अचीव प्रोडक्शन इफिशिएंसी मीन्स KK पिलर, JH पिलर, प्लान मेंटेनेंस एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस to upgrade their skill. Establish initial production and flow control system for new product and equipment. Establish in situ Hosen means quality maintenance system. It is one of the another pillar. Establish the system to realize operational efficiency in the administration department. Establish safety, hygiene and working environment and protection of the system. पर्पज एंड मेन एक्टिविटीज ऑफ 8 पिलर ऑफ टीपीएम। अब हमने ये तो समझ लिया कि टीपीएम में 8 पिलर है, तो वो 8 पिलर कौन कौन से हैं और उनका पर्पज क्या है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस। उसका पर्पज है ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर, प्रोफिशिएंट इन इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिंग वंस ओन इक्विपमेंट बाय वन स्टाफ। इसके जो मेंबर रहेंगे वो रहेंगे इन्वॉल्वमेंट, इसमें ऑपरेटर, लाइन लीडर, और जो ये एक्टिविटी है इसमें 7 स्टेप मेथोडोलॉजी दी हुई है। सबसे पहले क्लीन अप डिफिकल्ट टू एसेस लोकेशंस, काउंटर मेजर फॉर द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड मेजर फॉर द इंस्ट्रूमेंट, क्रिएशन ऑफ टेंटेटिव ऑटोनोमस मेंटेनेंस स्टैंडर्ड, जनरल इंस्पेक्शन, ऑटोनोमस इंस्पेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑल आउट गोल्स मैनेजमेंट। ये सारी 7 स्टेप इसमें दी हुई है। उसके बाद इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट इन KK पिलर। Purpose: realize zero losses of all types such as failure losses and defect losses. Demonstrate ultimate production efficiency improvement. Members रहेंगे ऑपरेटर्स और लाइन लीडर्स। इसमें जो एक्टिविटीज करनी है उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ 16 मेजर लॉसेस कौन कौन से है उसको आइडेंटिफाइड करना है। कैलकुलेटिंग एंड सेटिंग गोल्स फॉर ओवरऑल
equipment efficiency, productivity and production subsidiary resources, implementation of PM analysis and throughout pursuit of equipment and production as it should be. नेक्स्ट पिलर है प्लान मेंटेनेंस, जिसका पर्पस है इंप्रूविंग इफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू प्रिवेंट एट मेजर लॉसेस. मेंबर्स उसमें रहेंगे स्टाफ, लीडर एंड मेंटेनेंस मैन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. उसमें एक्टिविटीज जो हमारी रहेगी, उसमें एक्टिविटीज रहेगी कि डेली मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, इंप्रूवमेंट फॉर इंक्रीजिंग द सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंट्रोल ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स, फेल्योर एनालिसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस एंड लुब्रिकेशन कंट्रोल. अगला जो हमारा पिलर है वो रहेगा क्वालिटी मेंटेनेंस. उसका पर्पस है अचीविंग जीरो डिफेक्ट्स बाय सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट कंडीशन. उसमें मेंबर्स रहेंगे क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टाफ, लाइन ग्रुप मैनेजर. और उसकी जो एक्टिविटीज रहेगी, वेरीफाई क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड, अंडरस्टैंड डिफेक्ट फिनोमेना एंड परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर बिल्डिंग इन क्वालिटी यूनिट प्रोसेसेस एंड रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स, investigating, analyzing and improving the condition of malfunctions, setting 3M conditions, setting standard values for inspection, creation of standard that can be followed by the trade management. नेक्स्ट पिलर आपका रहेगा डेवलपमेंट मैनेजमेंट. उसका पर्पस है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग टाइम, रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट डिजाइन एंड फैब्रिकेशन टाइम ऑफ इक्विपमेंट, इंप्रूविंग वन शॉट स्टार्टअप स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट. उसमें मेंबर R&D के सारे स्टाफ रहेंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टाफ एंड मेंटेनेंस स्टाफ रहेंगे. उसमें एक्टिविटीज जो दी गई है, सेटिंग डेवलपमेंट एंड डिजाइन गोल, इजी ऑफ प्रोडक्शन, इजी ऑफ QA इम्प्लीमेंटेशन, इजी ऑफ यूज, easy of maintenance, reliability that is reflected in manufacturing design, investigate LCC, production, identify problems in prototype, trial run, initial phase mass production and control stages. नेक्स्ट आपका पिलर रहेगा ऑफिस TPM, जिसका पर्पस रहेगा अचीविंग जीरो फंक्शनल लॉसेस, क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट ऑफिसेस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज, सपोर्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें मेंबर रहेंगे लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट. इसकी जो एक्टिविटीज है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटीज, इनिशियल क्लीन अप, वर्क इन्वेंटरी, काउंटर मेजर ऑफ प्रॉब्लम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑटोनोमस मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट जो रहेगी, shortening of settlement schedule, improvement of distribution, improvement of purchasing and subcontracting and reform of production control system. अगला जो पिलर रहेगा वो है सेफ्टी एंड हेल्थ, जो उसका पर्पस है अचीवमेंट एंड सपोर्ट टू जीरो फेल्यूर्स, रियलाइजिंग ऑफ हेल्दी इन्वोग्रेटिंग वर्कप्लेस दैट गिव्स मीनिंग टू द वर्क. मेंबर रहेंगे सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजर्स एंड स्पेशलाइज्ड कमिटी मेंबर्स. एक्टिविटीज जो रहेंगी, मेजरमेंट टू इंप्रूव इक्विपमेंट सेफ्टी, इंप्रूव वर्क सेफ्टी, इंप्रूव वर्क इन्वायरमेंट, मेजर टू प्रिवेंट पोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ हेल्दी एम्प्लॉय, प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटीज. और जो अगला पिलर है लास्ट वाला, वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसका पर्पस है कि टेक्निकल एजुकेशन ऑफ ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस वर्कर. इसमें मेंबर ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस वर्कर रहेंगे. एक्टिविटीज जो है बेसिक प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस, टाइटनिंग नट बोल्ट, अलाइनमेंट कीज, मेंटेनेंस ऑफ बेयरिंग्स, maintenance of conducting parts, prevention of leaks, maintenance of oil pressure and air pressure equipment, maintenance of electric control and equipment. Thanks for seeing this video. आगे का जो TPM अवेयरनेस सेशन रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.